Good morning, students. We are going to start with a new chapter number 6, that is Places of Indian Culture Heritage. This is your last chapter of history section of revised syllabus. Now, places of culture heritage. India is a country with a huge cultural heritage. Okay, so India has number of places which have been registered in UNESCO site, and even if not registered in UNESCO site, we are having number of places which are worth seeing from viewpoint of culture. So we are going to study about that. Places of Indian cultural heritage. The cultural heritage of India is very rich and prosperous. India as well as foreign visitors are attracted to visit the places of culture and natural heritage of India. In this chapter we shall study about these places. As I told you, in this chapter we are going to study about the various places of India from viewpoint of culture. So first comes Ajanta caves. The famous caves of Ajanta are situated in Auranga district of Ajanta village. Okay, Auranga district which comes in Maharashtra state. They are important from viewpoint of art of Vastu. These caves are divided into two divisions. First caves are based on wall painting and second caves are based on sculpture. See now when we just लिसन द नेम दैट अजंता केव्स, हमारे दिमाग में कौन सा पिक्चर आता है? गुफा होगी और अंदर पिक्चर्स होंगे, ठीक है, ऐसा ही कुछ ऐसा ही कुछ पिक्चर हमारे दिमाग में आता है. बट इट इज़ नॉट सो. दीज आर वेरी वेरी ओल्ड केव्स developed by very old people, and if you will see the great work of sculpture has been done. इतना सारा huge work उस टाइम में लोगों ने कैसा किया होगा, that is a big question mark. Caves of number 1, 2, 10, 16 and 17 are excellent wall painting and have attained the highest rank in wall painting. The theme of this wall painting is Buddhist religion. Ajanta caves are divided into two categories. They are Chaityas and Viharas. Cave number 9, 10, 19, 26, 29 are Chaityas, whereas the remaining caves are Viharas. Okay, इसमें से ये now what are Chaityas and what are Viharas, it has been given below. यहाँ पे हम पढ़ेंगे what does mean by Chaityas and what does mean by Viharas. Ajanta caves were forgotten with the passage of time, but in 1819 AD, an English captain John Smith rediscovered them. Ajanta caves are the magnificent example of ancient Buddhist art of Vastu, art of painting and sculpture. Human interference and impact of time have greatly damaged them. Ajanta caves are famous not only in India but also in the world for their extraordinary rich art. See, when we see the photos, if we have not seen it physically, we can see the photos of this Ajanta caves and Ellora caves. That time we just think that how the big magnificent work had been done by the people of that time. The fine blending of wonderful art of painting, sculpture and architecture of Ajanta caves have earned pride for an Indian art. Now what is meant by Chaityas? Chaityas means temple hall for Buddhist monk. कई फिल्मों में आपने देखा होगा एक बड़ी सी बैल होती है जहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति होती है और जहाँ पे लोग प्रेयर करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड, इवन इफ यू आर सीन इन सम ऑफ द चाइनीज मूवीज, ओके, दैट इज़ कॉल्ड चैत्यस. स्तूपास आर बिल्ट इन द इंटीरियर मोस्ट एंड ऑफ द केव्स. स्तूपा, यू ऑल नो व्हाट द शेप ऑफ स्तूपा, हमने चैप्टर नंबर 3 में शायद पढ़ा था कि द ओवल शेप जिसका होता है उसको स्तूपा कहा जाता है. एंड विहारास मीन्स बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क रिसाइड एंड स्टडी. उनकी रहने की जगह को कहते हैं विहारास. See now, these are the various pictures of Ajanta caves की ये सब pictures है. ओके, ये जो caves है इसके अंदर यू कैन सी ओवर हियर, इसके अंदर कार्विंग की गई है, इसके अंदर से पूरे रास्ते बनाए गए हैं. नाउ दिस इज़ वॉट चैत्या, इसको चैत्यास कहते हैं, ठीक है. दिस इज़ अ प्लेस वेयर सी यू कैन सी द आइडल ऑफ आइडल भी देखते हैं और यहाँ पे लोग प्रेयर करते हैं. You can see various sculpture over here. This is in the interior part of this cave. So just imagine how much work these people have done, okay, during that time. So these are the various pictures of Ajanta caves. This is a pillar work, okay, pillar art जिसको कहते हैं. Next comes Ellora caves. Ellora caves are situated at Aurangabad district in Maharashtra. There are 34 caves in all.
there are three group of caves temples and they are different from each other. Okay, now 1 to 12 is of Buddhist religion, 13 to 29 Hindu, and 30 to 34 Jain caves. So according to the religion, the caves are different. Hindu caves are built during the reign of Rashtrakuta dynasty. Kailash temple is situated in cave number 16. It is 50-meter long, 33-meter wide and 30-meter high. 50-meter long मतलब it is not a less कम जगह नहीं होती है. ओके, 50-meter long, 33-meter wide ये जगह है. दिस टेम्पल इज कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल मैसिव रॉक. एक पत्थर में से ये पूरी टेम्पल बनाया गया है. दिस टेम्पल इज adorned with beautiful doors, balconies and series of pillars. The beauty of temple cannot be described in words. They are constructed during the reign of 1600 AD to 1000 AD. It is a live display of ancient Indian civilization. ये सब चीज़ें दिखाती है कि ancient Indian लोग कैसे किस तरीके से रहते थे. Caves dedicated to Hindu, Jain and Buddhist religions. Ellora campus is not only an example of magnificent creation of art but also best example of excellent technology. ये एक टेक्नोलॉजी का भी, क्योंकि तब बिना किसी सपोर्ट के ये चीज़ें सब बनाना, आज के टाइम पे तो वी आर हैविंग नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड नंबर ऑफ मशीनरीज थ्रू विच वी कैन वर्क, बट ड्यूरिंग दैट टाइम देर वॉज नो नथिंग लाइक इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एट दैट टाइम ऑल्सो दे हैड वर्क दिस मच, सो इट इज़ एन best example of excellent technology. Moreover, it describes about the patience of Indian. Of course, it describes the patience, because doing this many work, this much huge amount of work, and that too without any modern technology is not that easy. Now these are the pictures of Ellora caves. Okay, ये सब Ellora caves के pictures है. See over here, you can see how beautiful work these people have done on stone. Okay, ये पूरा ये जो मंदिर है वो पूरा एक स्टोन में से बनाया गया है. सो दिस आर द वेरियस पिक्चर्स ऑफ Ellora caves. हमारे दिमाग में केव का मतलब सिर्फ एक गुफा होती है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. दिस आर द वर्क डन इन द केव्स. So this is Ellora caves. The previously we had seen was Ajanta caves. Next comes Elephanta caves. These caves are built in Arabian Sea. Arabian Sea is on the west side of India. गुजरात को टच करती है. 12 kilometers away from Mumbai in Maharashtra. There are 7 caves in all. See, there is a large stone monument of Elephanta. On seeing this structure, the Portuguese named it Elephanta. Elephanta नाम क्यों दिया गया था? Because वहाँ पे एक बहुत बड़ा एलिफेंट का स्ट्रक्चर है, जिसको देख के पोर्चुगीज सेलर ने उसको एलिफेंटा नाम दिया था. Many beautiful figures have been carved out of them. The magnificent Trimurti, that is Brahma, Vishnu and Mahesh, in cave number 1 is the best specimen of sculpture. See now, this is the best specimen of sculpture. Even after this many years, it has not get destroyed. UNESCO has placed Elephanta caves in the list of World Heritage. Local fishermen call it Dharapuri. इसको क्या कहा जाता है? Dharapuri. Now this is that sculpture picture. Okay, and this is about Elephanta caves. Next comes Mahabalipuram. Now Mahabalipuram is a place in Tamil Nadu district. लास्टली जब चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग आए थे, महाबलीपुरम में ही मीटिंग की गई थी. ओके, सो महाबलीपुरम इज लोकेटेड वेयर 60 kilometers away from Chennai, and Chennai is capital of Tamil Nadu. This city of Tamil Nadu is famous for its splendid temple architecture and seashore. Narasimhavarman I, who was popularly known as Mahamalla, belonged to Pallava dynasty. किस डायनेस्टी को कई सारी वंश, डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? वंश. जैसे यहाँ पे होता है ना सोलंकी एरा, सोलंकी वंश, देन वाघेला वंश. हम गुजरात की हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तब ये सब पढ़ते हैं. सो दे बिलोंग टू Pallava dynasty. 7 chariot temples were built here. At present, only 5 chariot temples exist. There were 7, but now there are only 5. 2 chariot temples have submerged in sea. सी में वो समझ हो गए, बिकॉज द प्लेस इज नियर द सी कोस्ट. एंड यू हैव स्टडी अबाउट द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिकल प्लेट्स. मेनी टाइम्स इट हैपन्स दैट a land area gets submerged in sea. During tsunami 2004, Indira Point, which was the last point of India, got submerged in sea because of tsunami in that area. So there is an amazing figure of Lord Vishnu in a smiling pose. Besides, there is an idol of goddess Durga slaying Mahisasura is worth seeing.
Mahabalipuram, which has an unparalleled architectural rock sculpture, was also famous harbor of ancient India. Harbor का मतलब होता है sea port. So it was also very famous sea port. There is a story like that Pandavas during the time of Vanvas they had reached in the these five chariot temples are of Draupadi, Arjun, then Yudhishthir उनके chariot temple है. And during their Vanvas period, they had stayed all over in India. They were just roaming from here to there. So that was also a place where they have stayed. Like हम जहाँ पे ये भावनगर में कोड़िया कहते हैं कि यहाँ पे पांडव जाके रुके थे. In the same way they had stayed on at this place also. Pattadakal Memorial. Now Pattadakal is a place in Karnataka state. Pattadakal, the capital of Chalukya dynasty, is 60 km away from Badami Nagar, and Dravidian style of architecture is used in construction of temple here. Okay. दूसरा फेमस नगर ऑफ कर्नाटका इज विजय राजनगर. अगर आपने तेनाली रामा सीरियल देखी होगी तो उसमें विजय राजनगर के बारे में कहा गया है. एंड दिस बादामी नगर एंड विजय राजनगर वर द टू राइवल स्टेट्स ऑफ दैट टाइम. ओके. सो देयर वाज अ These were built during the 7th and 8th century. Virupaksha temple is the biggest temple of Pattadakal. इसका सबसे बड़ा टेम्पल है विरूपक्ष. कर्नाटक का फेमस टेम्पल है विरूपक्ष. इफ एट ऑल समवन हैड गॉन ओवर दैट दे वुड हैव सीन, अदरवाइज टीवी में भी देखा होगा. नाउ दिस इज अ प्लेस, दिस आर द फोटोज ऑफ महाबलीपुरम. ये सब महाबलीपुरम के फोटो से. आई टोल्ड इट इज ऑन द सी कोस्ट. सो 2 चैरिट टेम्पल्स हैव गॉट समर्ज इन ओवर हियर. दिस इज वेरियस जो चैरिट टेम्पल कहे गए हैं. दिस आर द वेरियस चैरिट टेम्पल्स एट महाबलीपुरम. नाउ दिस आर द फोटोज ऑफ पत्तादकल विरूपक्ष टेम्पल की जो पत्तादकल प्लेस है. ये सब उसके फोटोज है. दिस इज द टेम्पल एरिया ऑफ पत्तादकल. ओके. नेक्स्ट कम्स टेम्पल एट खजुराहो. नाउ खजुराहो इज अ प्लेस इन MP district, Madhya Pradesh, our neighboring state. So these temples are located in small village named Khajuraho at Chhatarpur district of Madhya Pradesh. Khajuraho was the ancient capital city of Chandela Rajput of Bundelkhand. So temples were built by this king during the reign of 950 to 110 AD. Presently 25 temples are in existence. Most of them are Shiva temple, whereas some are Vaishnav and Jain temples. They have all similar type of architecture and sculpture. The 64 Yoginis temple is a main temple. The Toran of the temple is the best example of ornamental style of architecture. We have studied this in chapter number 4. What does mean by Toran and what does mean by pinnacle and all those things. Okay. सो जो ऊपर का जो सर्कल होता है मतलब मंदिर में हम एंटर होते हैं और वो जो पहला पिलर होता है उसको तोरण कहा जाता है. All of the temples were constructed with granite stone. Okay, granite is an igneous rock, igneous type of stone. Khajuraho temples were constructed in Nagar style of art or sculpture, and the art of Vastu of Khajuraho temple is spellbound the visitor. Yes, it is a very good art. Then in this temple, art doesn't mean drawing, the carving and all those things. Okay. Next come Sun Temple of Konark. कोणार्क के सन टेम्पल के बारे में सबको नाम तो सुना होगा. दिस डू कम्स इन आची के बुक सन टेम्पल ऑफ कोणार्क. इट इज सिचुएटेड नियर द बे ऑफ बंगाल एट पुरी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा. पुरी इज अ डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा फेमस फॉर जगन्नाथपुरी यात्रा. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 13th century ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग नरसिंह वर्मा वन. नरसिंह वर्मा, सॉरी यहाँ पे नरसिंह वर्मा लिखा है बट द एक्चुअल आंसर इज नरसिंह देव, बट यू हैव टू कीप नरसिंह वर्मा बिकॉज इट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक. Okay, who belonged to Garg dynasty. This chariot temple drawn by 7 horses took the form of chariot temple of sun god. It has 12 massive wheels providing beauty to the pedestal of temples. Okay, these wheels reflect 12 months and each wheel had 8 spokes which shows 8 prahars of a day. Prahar matlab particular time of a day. Details of motif and subject diversity of this temple is unparalleled. This temple was built by black stone, hence it is known as Black Pagoda in Odisha. This temple reflects the sculpture and civilization of 13th century of Odisha. Odisha की 13th century में कैसा वर्क किया जाता है उसके बारे में ये जानकारी देता है.
सन टेम्प सॉरी कोणार्क का मतलब होता है सन, ओके। कोना मतलब अ कॉर्नर एंड आर्क का मतलब होता है सन, सो it is known as Konark. And this temple is built in कलिंग स्टाइल ऑफ आर्ट। जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा दैट खजुराहो टेम्पल नागा स्टाइल ऑफ आर्ट में बना है, वैसे ही कोणार्क टेम्पल कलिंग स्टाइल में बनाया गया है। नेक्स्ट कम्स see this is about these are the pictures of Konark temple of Odisha. This is a starting gate एंड यर सी आई थिंक या इस इमेज में दिख रहा है कि कुछ वर्क चल रहा है, तो शायद गवर्नमेंट इस पर कुछ काम भी कर रही होंगी। नेक्स्ट कम बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तांजोर विच इज़ इन तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट, सॉरी तमिलनाडु स्टेट। दिस टेम्पल इज लोकेटेड एट तांजोर इन तमिलनाडु। दिस टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग 103 to 110 AD, ओके। मतलब ये 10वीं सदी में बनाया गया टेम्पल है। इट इज़ अ शिवा टेम्पल, सो इट इज़ कॉल्ड बृहदेश्वर, बृहदेश्वर भी बोल सकते हैं आप। इट इज़ बिल्ड बाय किंग राज राजा वन ऑफ चोला डायनेस्टी। राज राजा वॉज अ वेरी फेमस किंग ऑफ तमिलनाडु, ओके, एंड ही बिलोंग टू चोला डायनेस्टी। इट इज़ नोन एज राज राजेश्वर टेम्पल। द हाइट ऑफ दिस टेम्पल इज़ 500 फीट, 500 फुट बड़ा ये टेम्पल है। इट्स विड्थ इज 250 फीट। इट इज स्प्रेड इन अ वास्ट एरिया सराउंडेड बाय वॉल। इट्स समिट इज 200 फीट हाई अबाउट द ग्राउंड लेवल। हैंस दिस टेम्पल अटेंड द प्लेस इन द टेम्पल्स ऑफ जस्ट अ सेकेंड temples with high pinnacle. There is a marvelous heritage of architecture of art of India due to its gorgeous and huge size of pinnacle, okay। उसकी pinnacle बहुत बड़ी है, इसकी वजह से उसका that is a an artistic decoration. In the same way, it has secured a place among the best temples of South India. It has been constructed in Dravidian style of art. Okay. Now see here, you can see it has a huge pinnacle. Pinnacle किसको कहते हैं? The highest point over here. उसके नीचे जो ये होता है इसको pinnacle कहते हैं. So and it has, see, it is beautifully carved temple. So it has got entry in the United UNESCO site. Qutub Minar. Qutub Minar नाम तो everyone knows and might you have seen in movies also. Qutub Minar is located at Delhi. It was built in 12th century by Qutub bin Aibak, okay, who was founder of Ghulam dynasty. Qutub Minar 1199 में बनाया गया है and Qutub bin Aibak, he was of Ghulam dynasty जिसने ये बनाया था. Actually he was a person who was because of the huge Mughal empire, he was looking after this area. After his death, the remaining work was completed by his son-in-law Iltutmish. This 72.5 meter tall skyscraper is made out of round red stone and marbles. Its circumference is 13.75 meter high at its base and it reduced to 2.75. सबसे नीचे वो इतना बड़ा circumference है, while it is reduced to 2.75 at the top. Verses of Quran have been engraved on it. It is the tallest stone minaret of India. ये सबसे बड़ा मीनारेट है। 1199 में ये बनाया गया था बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके। नाउ ऐसा कहा जाता है कि इसकी एक वॉल पे ऑन द सदर्न साइड और ऑन वन ऑफ द वॉल यहाँ पे संस्कृत श्लोक भी है, आज भी है। सो ये दैट थिंग शोज दैट इट वाज फर्स्ट अ प्लेस ऑफ Hindu or you can say Buddhist religion, and later because of the Mughals coming in India, it got changed into this form. Okay, so on one wall संस्कृत के श्लोक पाए जाते हैं and it is a सबसे tallest minaret है इंडिया का. So this is about this is about कुतुब मीनार. नाम ही कुतुब इसलिए दिया गया क्योंकि उस राजा ने बनाया गया था. नाउ इट इज़ नॉट अलाउड टू गो ऑन इन कुतुब मीनार. सब आप बाहर से देख सकते हो, इसकी हाइट देख सकते हैं, बट यू आर नॉट अलाउड टू क्लाइम दिस कुतुब मीनार. गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है. ओके, सो विल स्टॉप इट ओवर हियर. Today we had seen about Mahabalipuram, Batadakal Memorial, then about the temples of Khajuraho, Sun Temple of Konark, Qutub Minar. So later we'll continue with other places. Thank you.